Hello everyone, welcome you all. Let's start our discussion and solve physics question paper of Cpet 2023. There are total 80 questions, but today in this video we will solve first 20 questions. Okay, let's start. Question number 1. If three particles each of same mass are at points 1, 2, 3, 2, 3, 4 and 3, 4, 5, then the center of mass of this system is at. So here you have to use the mathematical formula for the center of mass, that is RCOM equals to summation MI divided by summation MI. Okay. Now H, this is a three-dimensional problem, so you have to find separately for X, Y and Z. Okay. So before solving this question, let us discuss some important points about the center of mass. Okay. So first, this formula is for discrete system of particles. Okay, but if you are given with a continuous system, that in that case you have to write the formula as center of mass will be equals to integral dm r by summation dm. Okay, now always in a system, center of mass always lie at symmetric point. And if there is no symmetric point, then the center of mass will lie at symmetric line. Okay. Next, now if we are having a system of two mass, okay, one of the mass is m and the second mass is 5m, then in this system, center of mass will lie closer to the heavier mass. Okay, so you should remember these three important points. Okay, next, let us calculate. Okay, center of mass for this given system. Now you can directly use the formula here for X. Center of mass will be in place. Here you have to use the X coordinate, that is 1, 2, 3, and it is given that the particles having same mass. So you can take mass common. So mass 1 plus 2 plus 3 divided by 3m. So m cancel, 1 plus 2 plus 3, 6 divided by 3, it is 2. Okay, next for y, 2 plus 3 plus 4, that is 9 divided by 3, that will be 3. Okay, this is 2, this is 3. Now for z, it is 3 plus 4, 7 plus 5, 12. 12 by 3, that is 4. Okay, so center of mass will be 2, 3, 4. Okay, so your correct option is option B. Next, now you should remember center of mass for some standard object. Okay, देखो नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन अच्छी देखिबो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर। तो तमर जदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ऑब्जेक्ट रो मने अछि तमे डायरेक्टली ऑप्शन टिक करि परिबो। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास पाई हेले तो जेमति कि नेक्स्ट फॉर ए सेमी रिंग। ओके, सेंटर ऑफ मास फॉर ए सेमी रिंग, दिस इज सेंटर फ्रॉम सेंटर। ओके, दिस इज योर सेमी रिंग। Center of mass will be center of mass for semi ring will be 2r by 5. Okay, next for semi disk. Okay, semi disk center of mass will be 4r by 3. Okay, देखो एठी मने रखिबो ए जो सेंटर ऑफ मास मेजर कोठु हिची ना फ्रॉम सेंटर। जदि से तुमको केबे पेरिफेरी रु पचाउची ताले डिफरेंट हबो से केस रे। ओके, जेमति कि देखो फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर from center it will be center of mass will be 3r by 8. but jodi question le kebe se tum kemti pachauchi ki find the center of mass for this solid hemisphere from this point from periphery. Now this এই কেস রে 3r by 8 হবো। এই কেস রে কেতে হিজবো না r minus 3r by 8, that will be 5r by 8.
Okay, similarly, you should remember for hollow hemisphere. For hollow hemisphere, it is R by 2, center mass, from center. Okay, similarly, for solid cone, okay, for solid cone, from again from this center of mass will be H by 4. For hollow cone, from center will be H by 3. देखो जदि क्वेश्चन ले से ए पॉइंट रो पचारिबो ताले तुम कोन करिया पड़िबो ना H minus H by 3, H minus H by 4 बुझिएला. Okay, so next question. If a particle is at rest in a rotating reference frame, the magnitude of Coriolis force acting on the particle is. Okay. तो देखो आमे फास्ट कथा देखिबा कि Coriolis force रो जो concept कोठो आसछु. So remember, whenever a particle is observed from a rotating reference frame. Okay, whenever a particle is observed from a rotating reference frame, then there will be Coriolis force on the particle, whether the particle is at the frame or inside the frame or outside the frame. But the condition is that the particle should have some relative velocity with respect to the rotating frame. Okay, that means if the particle is having zero velocity, or that means the particle is at rest, then the Coriolis force will be zero. So in that case, it will be zero. Okay, so before going to the answer, let me write down the mathematical formula for Coriolis force, and that is F. Force माने कौन vector direction आसीबो, तो F equals to 2m v cross ओमेगा मैग्नीट्यूड लिखिबा. ता पूर्व देखो डायरेक्शन कोन हबो ना कोरियोलिस फोर्स रो डायरेक्शन कोन हबो ना जो पार्टिकल जो मोशन करछि तार वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर डिपेंड करिवो कि फाइनली कोरियोलिस फोर्स रो डायरेक्शन कोन हबो. नेक्स्ट हमें जदि एबे कोरियोलिस फोर्स रो मैग्नीट्यूड लिखिबा सी ओ आर, तो केते हिजबो देखो v इक्वल्स टू हमें केते जानिछे ओमेगा आर. तो मैग्नीट्यूड सब बेले कोन मन रखिबो ना 2m ओमेगा स्क्वायर आर. बुझियला 2m ओमेगा स्क्वायर आर. ओके, तो ए केस रे कोन होउची ना कोरियोलिस फोर्स जीरो काहे कि ना दैट पार्टिकल इज रेस्ट इन ए रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम. अच्छा गोटे कथा इटी कहि रखिबी देखिबो ए जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम केस हो बा हमर रिलेटिविटी रे हो, जदि क्वेश्चन ले देखिबो इन से माने क्वेश्चन ले लिखिचंती तार अल्टरनेटिंग मीनिंग तमे बुझी पारिबो कि विथ रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम. ओके, एटा ध्यान रखिबो टिके. नेक्स्ट, अच्छा ऑप्शन लो तमे भी कहि परिबो कि एई ऑप्शन टा ही ठीक आउ ए बी डी ठीक नो कोन पई ना. देखो एठी हमको से पचारची कोन कोरियोलिस फोर्स, तो जो एक्सप्रेशन देइची ए बी डी रे डेफिनेटली से जो एक्सप्रेशन लो डायमेंशन कोन हवा दरकार ना फोर्स रो डायमेंशन. बट तुमे चेक करी के देखिबो ए तीनटा रो कहारी भी डायमेंशन फोर्स रो डायमेंशन मैच होनी. दैट मींस दिस सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट, with the rotating frame there is one more force, okay, that is called centrifugal force. Okay, तो मन रखिबो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रो मैग्नीट्यूड केते ना m ओमेगा स्क्वायर r. कोरियोलिस फोर्स रो केते ना 2m ओमेगा स्क्वायर r. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रो केते ना m ओमेगा स्क्वायर r. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रो पुनी सी भी फोर्स माने डायरेक्शन आसीबो, तो तारो डायरेक्शन कोन हबो. अच्छा एठी आ गुटे पॉइंट कोन, लेट मी टेल यू. Now this is axis of rotation. There is a particle. Okay. देखो ए केस रे कोन होला कोरियोलिस फोर्स रो मैग्नीट्यूड सेतेले आसीबो जेतेले when the particle having some finite velocity v. But in case of centrifugal force पार्टिकल रेस्ट रे थाउ मोशन करथौ जो केस थिले भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हबो. तो एठी पार्टिकल रेस्ट रे थिले भी वेलोसिटी जीरो हेले भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रो मैग्नीट्यूड केते रहइबो ना m ओमेगा स्क्वायर r. Okay, and next direction. Direction kono na the centrifugal force. Direction of centrifugal force is always perpendicular to the axis of the rotation of the rotating frame, and it is always away from the axis of rotation. Okay, always away from the axis of rotation and perpendicular to the axis of rotation. Okay. Next, 3. Moment of inertia of a solid sphere about a tangent is.
देख मु क्वेश्चन नंबर 1 ले कहतली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पचारछि बोली देख तुमर जदि एठी मने अछि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमे डायरेक्टली टिक करि परिबो जे 7/5 mr2 ओके बट जदि मन नै डेरिवेशन करिया पड़ियो बट देखो ए सब एग्जाम कोन कि टाइम लिमिटेड तुमे जेते एक्सप्रेशन मने रखिबो तुम पई सेते हेल्पफुल हबो तुमे डायरेक्टली ऑप्शन देख के टिक करि परिबो बुझिला कि तो देखो फॉर ए सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देखो तुमको मने कोन रखिया पड़िबो ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर देखो यार एक्सप्रेशन मन रखिया अछि यार एक्सप्रेशन केते ना 2/5 m r square now we have to find moment of inertia about this okay तो এই केस रे हमें कोन करिबा पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी नो I will be IC plus md square तो IC हमको जाना अछि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर d is the distance that is radius and I we have to found so in this case it will be 2/5 m r square plus m is the mass of sphere distance is r square so this is 7/5 m r square तो देखो एठी जो इंपोर्टेंट पॉइंट कोन पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें को केस रे लगै परिबा ना व्हेनेवर सेही केस रे कि जो केस रे ए दीटा एक्सिस भितरु जे कोनोसी गोटे एक्सिस कोन हेतिबो ना सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट रो सेंटर थ्रो रे पास करथिबो जदि देखो गोटे एक्सिस एठी अछि आ गोटे एक्सिस एठी अछि दिस इज फर्स्ट एक्सिस दिस इज सेकंड एक्सिस ए दीटा एक्सिस भितरे आमे ई स्फीयर पई पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करि परिबा कारण ए भितरु को एक्सिस भी सेंटर देकी पास है आमे केवल सेही केस रे करि परिबा जो केस रे जे कोनोसी गोटे एक्सिस सेंटर ऑफ से ऑब्जेक्ट रो सेंटर देकी पास करथिबो बुझिगला सिमिलरली यू शुड रिमेंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अदर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लाइक देखो ये सॉलिड स्फीयर दिला hollow sphere पई ना hollow sphere पई about center of this sphere it is 2/3 sorry 2/3 m r square okay तुमे जदि गोटे रिंग पई देखिबो about its diameter m r square by 2 about an axis passing through its center perpendicularly okay z axis भाबो तो सही केस रे कोन होबो ना m r square next तुमे जदि गोटे डिस्क पई देखिबो again about diameter केते ना m r square by 2 so m r square by 4 so m r square by 4 next जदि तमे तारो center passing through its center in that case that will be m r square by 2 एबे तुमे hollow cylinder पई इजीली लिखि परिबो अच्छा ता पूर्वरु गोटे लिनियर ऑब्जेक्ट पई देखो लिनियर ऑब्जेक्ट पई कोन जदि तारो सेंटर देकी पास करिवो ताले ml square by 12 जदि तारो एंड रे पास करिवो ml square by 3 बुझियला कथा एबे देखो hollow cylinder पई जदि एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ए केस रे कोन हबो देखो hollow cylinder माने रिंग कांसेप्ट आसीबो रिंग रो सेंटर देई गले केते ना mr square फिनिश जदि तार सेंटर देकी गला एबे देखिले लिनियर ऑब्जेक्ट पई सही टू मन रखि परियो तो ए केते हि जिवो ना m l square by 12 प्लस देखो रिंग रो डायमीटर पई केते ना m r square by 2 नेक्स्ट सॉलिड सिलिंडर पई तो एठी कोन आसीबो ना डिस्क रो कांसेप्ट आसीबो तो ई सेंटर देकी पास हेले केते हि जिवो m r square by 2 हाउ मिडिल देकी पास हेले कोन हि जिवो ना ml square by 12 प्लस m r square by 4 ओके नेक्स्ट तो एमिति जेते के स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट अछि ट्राई करो एसो करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मन रखिया पई देले डायरेक्टली तुमे ऑप्शन करि पारि नेक्स्ट फॉर द theoretical value of Poisson's ratio lies between 0.5 to -1 okay so Poisson's ratio is defined as lateral strain by longitudinal strain and remember this is a dimensionless ratio okay dimensionless ratio तो देखो ये तो याको तो तुमको मन ही रखिया पड़िबो तारो theoretical value but देखो यार रिलेटेड इनफॉरमेशन बा इंपोर्टेंट कांसेप्ट आउ कोन होई परिबो देखो देयर आर थ्री इलास्टिक कांस्टेंट वन इज यंग मॉडुलस वर्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन्स रेशियो ए जो चारिटा
क्वांटिटी भितर रिलेशन मन रखिबो बहुत थोर तांको भितर रिलेशनशिप पचारि लाइक तो दैट इज दिस y इक्वल्स टू 2 eta 1 plus sigma, then again y equals to 3k 1 minus 2 sigma. Okay, next one more, that sigma equals to 3k minus 2n divided by 6k plus 2 eta. ओके सो ट्राई करिवो ए तीनटा रिलेशन को मन रखिया पाई. नेक्स्ट 5, the depression at the middle of a light double cantilever supported at the ends and loaded at the middle is proportional. अच्छा देखो cantilever कहले कौन के any object that is fixed at one end, okay, fixed at one end and loaded at another end. In this case देखो ए केस रे हमें कोन करू गोटे डिप्रेशन क्वांटिटी को डिफाइन करू. ओके तार वैल्यू केते हुए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ओमे WLQ by 3 gamma I. देखो W टा कौन ना लोड, L is the length of this cantilever, Y is the Young modulus, I is geometrical moment of inertia. Okay, so similarly देखो ए केस रे कौन कहूची ना there is a cantilever, okay, there is supported at both end and there is load at in the middle. Okay, in that case देखो ये एक्सप्रेशन सेम आसीबो केवल कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंट आसीबो. तो ए केस रे डिप्रेशन केते आस्ताय ना WLQ 48y5. So here the depression is proportional to LQ. Okay, option B. Next 6, if the pressure inside two soap bubbles are 1.01 atmosphere and 1.02 atmosphere, the ratio of their respective volumes. देखो soap bubble means spherical, तो गोटे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रो आमे वॉल्यूम केमते लिखिबा 4/3 पाई आर क्यूब. तो आमे जति एटा को v1 by v2 करिबा ताले कोन हि जिवो हमरो r1 by r2 रो क्यूब. ता माने बेसिकली हमको जो गिवन इन्फॉर्मेशन 1.01 1.02 एटमॉस्फेयर हमको कोन काढिबार अछि ने केवल ई जो रेडियस रो रेशियो काढिबार अछि. हालां कि देखो तुमको गोटे जिंसटी मन रखिया पई पडिको. लेट फर्स्ट सी फॉर ए लिक्विड रो, फॉर ए स्फेरिकल लिक्विड रो the pressure inside pressure exceeds the outside atmospheric pressure by mathematical expression 2t by r. R is the radius of this spherical liquid drop. Next for soap bubble similarly you should remember the pressure inside pressure exceeds the outside atmospheric pressure by 4t by r. T is the tension, r is the again radius. एठो गोटे जिंस नोटिस करो ताले प्रेशर कहा ऊपर डिपेंड करछि ना रेडियस ऊपर केमति इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके तो ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आमे एबे देखिबा. अच्छा ई सोप बबल आ लिक्विड रो भितरे डिफरेंस कोन? हियर इनसाइड देयर इज लिक्विड आउटसाइड एयर, इन सोप बबल इनसाइड एयर आउटसाइड एयर. ओके इन बोथ केस. सो रिमेंबर दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दिस इज 40 by r, दिस इज 2t by r. ओके नेक्स्ट एबे हमको दरकार वॉल्यूम रेशियो. तो देखो फास्ट पाई फास्ट सब बबल पाई प्रेशर डिफरेंस केते आउटसाइड एयर टू केते हिजो 1.01 minus 1 atmosphere. So there that will be 0.01 atmosphere. For second it will be 0.02. okay ताले जदि हमें देखिबा ताले जदि हमें देखिबा P1 by P2 केते होचे रेशियो ना 0.01 by 0.02. आउ एंकर रेडियस रेशियो कोन हिची बडा ना R2 by R1. ओके बा ए रेशियो को आमे केमते लिखि परिबा ना R2 by R1 equals to 1 by 2. ओके वॉल्यूम अछि R1 by R2 ताले लिखिबा केमते ना 2 by 1 लो क्यूब that is 8 by 1. So your correct option is C. Next 7, if a planet moves around the sun in an elliptical orbit with semi-major axis A and time period T, then T is proportional. Okay देखो এটা কোন ডাইরেক্ট কেপলারস থার্ড ল, square of the time period is proportional to
cube of the semi major axis. So time period will be a cube by 2. So D is your correct option. Next, question number 8. Which statement is not true? Not true for central force problem. देखो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम बहुत इंपोर्टेंट जेकोसी भी एग्जाम तुम दियो है कि नेट हो गेट हो नेक्स्ट एसएसबी रो कोनोसी भी एग्जाम हो ओके तो देखो सेंट्रल फोर्स मोशन अच्छा फास्ट हमें देखिबा एक्चुअली हमें सेंट्रल फोर्स का कहबा ना फोर्स इज दैट central force is a force that is always directed towards a point or away from a point. That means its direction is fixed, either say towards the point or away from the point, and its magnitude depends only on the distance between 2 points. Okay, so for central force, you can directly write like this. Okay, it always directed towards or away from the point. So here in this case, it is FR magnitude depends only on the distance between the 2 points. Okay, तो ଏବେ ଦେଖିବା सेंट्रल फोर्स रो किछि कैरेक्टरिस्टिक्स तार फीचर्स कोन होला कि सेंट्रल फोर्स मन रखिबो इट इज ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव अच्छा सेंट्रल फोर्स रो एग्जांपल कोन हबो हमरो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charge is a central force अच्छा non central force रो एग्जांपल कोन non central force हला हमर मन रखिबो द स्ट्रांगेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर अच्छा आमे चारटा हमर जनरल फोर्स अछि ना नेचर रे कोन कोन स्ट्रांगेस्ट न्यूक्लियर फोर्स this electrostatic force then your weak force and gravitational force electrostatic force और gravitational force कोन हले से हले के central force अब जो nuclear force and your weak force these are non central force remember non central force ओके ओके तो कौन देखले हमें ना सेंट्रल फोर्स ऑलवेज कौन हबो कंजर्वेटिव अच्छा कंजर्वेटिव को हमें केमते एक्सप्रेस करू कि ना कर्ल ऑफ दैट फोर्स फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो ओके कर्ल एफ विल बी जीरो फॉर ए सेंट्रल फोर्स नेक्स्ट हमें एठो कोन लिख परिबा नै जो फोर्स जदी हमें कर्ल एफ तार जीरो होउची तले डेफिनेटली फोर्स को कोन हबो ना ग्रेडियंट नेगेटिव ग्रेडियंट पोटेंशियल हम एक्सप्रेस कर परिबो बुझिला एटा गोटे नेक्स्ट मन रखिबो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम रे ऑलवेज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अच्छा मु एंगुलर मोमेंटम रो मैग्नीट्यूड कहबी तो ता पूर्वरु एठु मन रखिबो आ गुटे कांसेप्ट आसे जदी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व दैट मींस द सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम इज ए प्लानर मोशन ओके ए सब रो एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन बा डेरिवेशन कोनोसी स्टैंडर्ड बुक रे भी मिल जिवो हले कि थोड़े रिवाइज करदबो अच्छा आमे कहूचे एंगुलर मोमेंटम कोन ना कंजर्व हो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम ताले तार तो किछ गुटे मैग्नीट्यूड रहइबो सेही कांस्टेंट रो केते हुए सेटा L = m r square थीटा डॉट बहुत इंपोर्टेंट याको मन रखिबो हला नेक्स्ट पॉइंट आउ कोन होई परिबो अच्छा देखो जदी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होची आमे टॉर्क केमते डिफाइन करी ना dl/dt टॉर्क आमे डिफाइन करी dl/dt जदी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होची ता माने कोन होबो ना टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो ओके नेक्स्ट आउ कोन हे परिबो ना एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट नेक्स्ट ये जदी कांस्टेंट है यार भी किछि मैग्नीट्यूड रहइबो केमते डिफाइन करा हबो ना L/2m L लो हमको मिली जाई छि एक्सप्रेशन m r square थीटा डॉट ता माने यार एक्सप्रेशन कोन हे जिवो r square थीटा डॉट बाय 2 ओके तो एति कि जिंसो एटलीस्ट सेंट्रल फोर्स पे मन रखियो जदी आउ तुमे किछि नोट रेड करि पाछो बहुत भलो कथा अच्छा ऑप्शन देखिबा सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव दिस इज करेक्ट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व दिस इज करेक्ट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट दिस इज करेक्ट मेकानिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व बट दिस इज नॉट करेक्ट मेकानिकल एनर्जी हमें कोन पूछे ना कंजर्वेटिव फोर्स माने सेडी टोटल मेकानिकल एनर्जी कंजर्व ऑलवेज ओके सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन बिकॉज़ एटी पचाछि कोन ना नॉट ओके सो ऑप्शन डी next 9 the magnitude of gravitational field at the center of a solid sphere of radius r अच्छा देखो ग्रेविटेशनल फील्ड रो एक्सप्रेशन कोन फॉर ए सॉलिड स्फीयर gm by r cube x gm by r cube x is the distance from the center अच्छा धरा जो तमरो ए आउटसाइड रे कैलकुलेट करछो बा इनसाइड रे भी कैलकुलेट करछो ए सेंटर रो डिस्टेंस टा होची x तो एटी से पचरची कोठी सेंटर रे ताले x0 हे गले f केते हे जीवो फोर्स फील्ड ना 0 ओके सो दिस इज योर करेक्ट
Similarly, you should remember for yes, देखो ये solid sphere ପାଇଁ ପଚାରିଛି ତ ତମେ spherical cell ପାଇଁ ବି ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି force field ପଚାରିଛି ତମେ try କରିବ ତାର potential ବି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଗଲା କଥା यार सेल लो सेमती सेल रे पोटेंशियल और फोर्स फील्ड मन रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 द टाइम पीरियड फॉर डेम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन इज देखो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है गला कि कोन ना t = 2 पाई बाय स्क्वायर रूट अंडर k by m minus b square by 4m square. Okay, so you can match option C. Option C is your correct option. 2 pi by square root under k by n m minus b square by 4m square. Next, 11. For a conservative system, generalized force here has necessarily the dimension of force because for the conservation of energy, this should be the dimension of force for a conservative system. Okay, so your correct option is option A. Next, 12. Hamilton's canonical equation are अच्छा देखो ये हैमिल्टन देखो अच्छा फर्स्ट लैग्रेंज इक्वेशन मन रखो तापर हैमिल्टनियन इक्वेशन लैग्रेंज इक्वेशन कोन ना dy dt del l by del q dot minus del l by del q equals to 0. This is Lagrange equation. Now Hamilton's equation next कोन আছে ना qk dot equals to del h by del pk pk dot equals to minus del h by del qk अब कौन था ना del h by del t equals to minus del l by del. Okay, so this is your Hamilton's canonical. अच्छा এই एक्सप्रेशन को से माने पॉइसन्स ब्रैकेट रे भी लिखि थान ताको मन रखियो अच्छा मते कहि भी याको कमेंट रे लिखिबो हैला कि जदि हमें हैमिल्टन्स इक्वेशन को पॉइसन्स ब्रैकेट रे लिखिबा यार एक्सप्रेशन और यार एक्सप्रेशन कोन हम या पई दरकार नै यार एक्सप्रेशन और यार एक्सप्रेशन बुझिएला नेक्स्ट सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Next, 13. If Lagrangian for a particle of mass m moving in a plane is अच्छा देखो Lagrangian given अछि तो मुको काढिबा को कोन पडिबो ना मोमेंटम तो मोमेंटम रो एक्सप्रेशन तुमको मन रखिया पे पडिबो मोमेंटम रो एक्सप्रेशन हमें केमते लिखो ना px = del l by del x डॉट तो बस याको केवल डेरिवेटिव कर दियो विथ रिस्पेक्ट टू x डॉट तो ये केते हिजिबो ना m x डॉट ये 0 0 S0 minus y. So mx dot minus y. देखो option C. Next, question number 14. Velocity profile of the liquid flowing through a narrow tube has parabolic shape. Okay, parabolic shape, and you should remember the velocity will be maximum at the center of the tube, and it will decrease towards the wall of the tube. Okay, so parabolic. Next, for momentum to be conserved, the Lagrangian is to be of what? अच्छा देखो जदि गोटे Lagrangian given अछि momentum ओ केस रे कांस्टेंट हुए ना if Lagrangian having cyclic coordinate okay if Lagrangian having cyclic coordinate अच्छा cyclic coordinate केमते डिफाइन हबो ना जदि Lagrangian लो एक्सप्रेशन ले गोटे कोऑर्डिनेट रो वेलोसिटी टर्म अछि वेलोसिटी टर्म प्रेजेंट अछि ओके आउ से कोऑर्डिनेट निजे प्रेजेंट नाही ताले आमे सेही केस रे से कोऑर्डिनेट कोन कहिबा ना साइक्लिक कोऑर्डिनेट. Okay, so L should be function of Q dot only. That means तुम चेक करो ऑप्शन ताले कोन हबो ना ऑप्शन सी हाफ m q dot square एई केस रे कोन हबो ना मोमेंटम corresponding to this coordinate q will be constant that is del l by del q dot तुम करिके तुम मोमेंटम को डिफाइन करि परिबो कि that will be the constant motion. Okay, so option C. Next, 16. If an electron is traveling with velocity 0.98 c, the mass of electron that appears to stationary observer in lab. अच्छा देखो रिलेटिविस्टिक केस रे आमे जानि छु कोन मास रो एक्सप्रेशन कोन m naught divided by square root under 1 minus v square by c square देखो वेलोसिटी रो वैल्यू गिवन अछि दैट इज 0.98 c तुमे जदि पुट करिवो c square कैंसिल ताले कोन हे जिवो m naught
1 माइनस 0.98 स्क्वायर या को कैलकुलेट करियो देखियो आसीयो नंबर 5 m नॉट सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नेक्स्ट 17 द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन इज अच्छा गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन ले हमें ऑर्डर और डिग्री केमते डिफाइन करू के कि द order of highest order derivative will be the order of the differential equation. So here it is 2 in degree the power of highest order derivative. So here it is 1. So correct option is C. Next 18. Wronskian for this y1 and y2 is अच्छा देखो ये क्वेश्चन ले एई थर से माने कोन करछन केवल रॉन्स्कियन लो मैग्नीट्यूड बा वैल्यू पचारछन्ती बट या ऊपर गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन हुए से पचारती कि एक्चुअली देखो ये जो y1 और y2 कौन है कि ये सब दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ओके तो ये सॉल्यूशन को तुम नहीं कि जदि तुम रॉन्सियन कैलकुलेट करछो से तार वैल्यू रो तुम कहि परिबो ए सॉल्यूशन लिनियरली डिपेंडेंट कि लिनियरली इंडिपेंडेंट तो ताको फास्ट मन रखो तुम इफ रॉन्सियन और दिस गिवन सॉल्यूशन इज 0 अच्छा मु तार डेफिनेशन लिखिबी केमते कैलकुलेट करिया जदि 0 हला ताले इधर सॉल्यूशन कोन हेबे प्रथमे जानो ना दे विल बी लिनियरली डिपेंडेंट जति रोन्सियन कोन हबो नॉट इक्वल्स टू 0 ताले कोन हेबे ना से माने लिनियरली इंडिपेंडेंट है बुझेला आ गोटे मन रखिबो गोटे होमोजेनियस इक्वेशन लो जदि तुम पाखरे दीटा लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अछंती तांकर कॉम्बिनेशन भी कोन हबो ना से होमोजेनियस इक्वेशन लो सॉल्यूशन हबो अच्छा हाउ गोटे जिंस डिफाइन करते डायमेंशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन जदि गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन आमे देखिबा केटा लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अछंती ताले से डिफरेंशियल इक्वेशन डायमेंशन केते हेबो ना के बुझिला एबे नेक्स्ट आमे देखिबा कि जो रोन्सियन को कैलकुलेट केमति करी हेले कि y1 y2 टर्म रे ही मु लेखुची रोन्सियन केते हेबो ना इक्वल्स टू डिटरमिनेट ऑफ y1 y2 y1 फास्ट डेरिवेटिव y2 फास्ट डेरिवेटिव बहुत इंपोर्टेंट ये कांसेप्ट को मन रखियो लिनियर डिपेंडेंट लिनियर इंडिपेंडेंट सब क्वेश्चन आगु आछि ओके तो एटे देखो तुम पुट करो y1 केते sin 2x ओके y2 केते cos 2x बुझियला तारो डेरिवेटिव केते ना 2 cos 2x यार डेरिवेटिव केते -2 sin 2x याको कैलकुलेट करो आसीबो तुमर वैल्यू -2 ओके तो देखो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट 19 टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ exponential minus z about point z equals to 0 अच्छा देखो जेकोसी फंक्शन f of z पाई टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट a हमें केमते लिखु करे ना f of a प्लस f dash a 1 factorial plus f double dash a sorry 2 factorial here will be z minus 2 sorry z minus a square similarly all other points तो ये जेकोसी गोटे गिवन फंक्शन पाई तो तमे जदी ये एक्सप्रेशन जणा अछि ताले ए फंक्शन जो गिवन अछि एक्सपोनेंशियल माइनस z तो पुट करके कैलकुलेट करि परिबो अबाउट 0 अच्छा तमरो जदी नेक्स्ट गोटे एक्सप्रेशन मने अछि कोनो ना कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x अबाउट 0 केते हिता हिगरे 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x4 by 4 factorial dot dot okay so next in place of x you have to put z so exponential minus z will be 1 minus z plus z square by 2 factorial minus z cube by 3 factorial plus z to the power 4 by 4 factorial so your correct option is this option b okay similarly there are taylor series expansion for various important function about x equals to 0 okay you should remember all those things so let me write down for you okay like let us first write for sin x okay देखो sin x ପାଇଁ तुम लिखला sin x ପାଇଁ टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट 0 ओके sin x ପାଇଁ केते हबो ना x minus x cube by 3 factorial plus x to the power 5 by 5 factorial minus x to the power 7 by 7 factorial plus like this देखो हमें जानि कोन sin 0 0 देखो x जगह 0 पुट करो 0 आसीबो बुझियला नेक्स्ट सेमली कोन करि परिबो ना cos x ପାଇଁ कोन ना 1 minus x square by 2 factorial plus x to the power 4 by
4 factorial minus x to the power 6 by 6 factorial plus dot. Okay, next मन रखो ln 1 plus x केते हेबो ना x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 या ऊपर जाम रे या ऊपर क्वेश्चन आसी गोटा देखिबो. ओके नेक्स्ट आउ कार मन रखिबो ना tan inverse x रो tan inverse x केते हेबो ना x okay minus x cube by 3 plus x5 by 5 dot 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 like this. Okay, there are also function like cos hyperbolic x. It will be 1 plus x square by 2 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial plus x to the power 6 by 6 factorial. which is sin hyperbolic x by kete na x plus x cube by 3 factorial plus x to the power 5 by 5 factorial plus x to the power 7 by 7 factorial. ବୁଝିହେଲା ତ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ. ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ସିରିଜ ବି ଅଛି ତମେ ଫୋରିୟର ସିରିଜ ରୁ ପାଇପାରିବ ସେ ସବୁକୁ ବି ମନେ ରଖିବ. ବୁଝିହେଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା କେବଳ ଲେଖୁଛି ଯେମିତି କି 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 equals to equals to 5 by 4. This is Madhava series. Okay, याको मन रखियो 1 minus 1 by 2 रो स्क्वायर plus 1 by 3 रो स्क्वायर 1 minus 1 by 4 रो स्क्वायर dot equals to pi square by 12. Similarly 1 plus 1 by 2 रो स्क्वायर plus 1 by 3 रो स्क्वायर plus 1 by 4 रो स्क्वायर equals to pi square by 6. बुझेला कथा 1 plus 1 by 3 रो स्क्वायर plus 1 by 5 रो स्क्वायर plus 1 by 7 रो स्क्वायर dot equals to pi square by 8. ये सब को नोट करी कि भलो से मन रखियो कारण जे कोनोसी एग्जाम भी तुमे अटेम्प्ट करो ए सब रो क्वेश्चन बहुत चांस अछि आसीबा पई बहुत इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन है सब. ओके नेक्स्ट 20 वॉल्यूम of tetrahedron with sides this is. अच्छा देखो तीनटा वेक्टर गिवन अछि तो फर्स्ट कथा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a डॉट b क्रॉस c ये कौन दिए गए. अच्छा a डॉट b क्रॉस c. ओके वॉल्यूम ऑफ parallelepiped is given by the magnitude of scalar product. ओके वॉल्यूम ऑफ ये कहार ना वॉल्यूम ऑफ parallel एठी कौन पचाउछि देखो टेट्राहेड्रन तो मन रखिबो टेट्राहेड्रन लो वॉल्यूम केते ना 1 by 6 of absolute magnitude of this scalar product. Okay, a dot b cross c which is the absolute magnitude of this scalar product of these vectors. So now you can calculate the volume from here. Okay, so it will be 1 by 6 देखो a dot b cross c को केमति लेखन दिगरे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. So 2 3 minus 4 1 2 minus 1 2 3 plus 4. ओके तो देखो एबे डिटरमिनेंट तुम इजीली कैलकुलेट करियो देखियो यार वैल्यू आसीबो 4/3. अच्छा या रिलेटेड आ कुछ इंफॉर्मेशन देखो हमें कोन जानि छै ना फॉर कोप्लानर वेक्टर्स मन रखियो फॉर कोप्लानर वेक्टर्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0 a डॉट b क्रॉस c विल बी 0. ओके नेक्स्ट अच्छा ये स्केलर प्रोडक्ट होची वेक्टर प्रोडक्ट को केमती एक्सप्रेस करू के हमें कि a क्रॉस b क्रॉस c रो बेक माइनस कैप रूट. ओके b a डॉट c माइनस c a डॉट b बेक माइनस कैप. okay okay so we have completed up to question number 20. We will continue from here in the next video. I think this will definitely help you in preparation of your exam, and if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching. See you in the next one.